आप सबको वेलकम इन योर मंथली रिव्यू मीटिंग। तो जैसे हम हर दफ़ा करते हैं, थोड़ी सी बात करने का आपसे मौका मिल जाता है, तो टुडे आई थॉट कि थोड़ी सी हम बात करें। जो हमारा एक एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं सेलिंग स्किल्स पे या मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर या लीडरशिप स्किल्स पे, उस पे थोड़ी बात करने का मैंने सोचा आज। तो अभी जैसे आपने आज इट्स योर रिव्यू मीटिंग, तो यू मस्ट बी लुकिंग आफ्टर कि who's performing well and who's not performing well, and why some people they perform extraordinary and why some people are not able to perform at extraordinary level और या एवरेज से above क्यों परफॉर्म नहीं करते। ये सिर्फ हमारी कंपनी में ही नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन में नहीं है, कि दुनिया के हर शोबे के अंदर आप देखते हैं कि दो लोग एक ही तरह का करियर शुरू करते हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम you see some people they go to the highest level in their profession, चाहे वो उनका रैंक ऑफ द प्रोफेशन है, चाहे उनका लीडरशिप स्किल है या उनका इनकम ब्रैकेट है। तो वो क्या रीजंस होती हैं कि हम देखते हैं कि अगर इवन के एजुकेशन बैकग्राउंड भी सेम है, प्रोफेशन भी सेम है, लेकिन कुछ लोग आउट परफॉर्म करते हैं दूसरे लोगों को, उसके क्या फैक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं। एक्चुअली देखें, कोई भी शख्स जो किसी भी प्रोफेशन के टॉप 1, टॉप 5 या टॉप 10 में है, एक दिन वो बॉटम 80 में ही होता है। वो ज़ीरो से ही शुरू करता है और ज़ीरो से ही शुरू करके वो फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि आपके किसी भी जॉब के दो पार्ट हैं, वन इज़ योर परफॉर्मेंस एंड अदर इज़ योर प्रेपरेशन। आपकी जो परफॉर्मेंस है कि जब आप जाके एक सेल्स कॉल करते हैं या अपनी टीम मीटिंग करते हैं, जैसे आज जो है जो कुछ आपने किया दैट इज़ योर प्रेपरेशन, और इसके नतीजे में जो जाके आप करेंगे दैट इज़ योर परफॉर्मेंस, या जो आपने आज प्रेजेंट किया वो आपकी परफॉर्मेंस थी और आज की मीटिंग एक प्रेपरेशन थी। अगर कोई भी चीज़ दोनों तरफ होती रहे, लाइक आप अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहें और उसकी प्रेपरेशन को बढ़ाते रहें, तो एक दिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखा गया कि ऐसे लोग जो बहुत पहले अपने प्रोफेशन में ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशन को अचीव करना है, तो उनके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ देयर गोल या वेयर दे वांट टू गो, what they want to achieve professionally, economically, or whatever their goal is, तो when you don't decide कि आपको जाना कहाँ है, तो वहाँ पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप खुद की evaluation सही तरह से करें कि what are my strengths, कि मेरी strength क्या है as a professional। जैसे अगर आप मैनेजरियल फील्ड के अंदर हैं, जैसे आप तमाम मिडल मैनेजर्स हैं, तो unless you don't evaluate yourself, what are the different parameters of a good management, what are the parameters of a good salesperson or a sales manager or a leadership, तो आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि उन्होंने प्लान करना है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, उन्होंने स्टाफिंग करनी है, उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, उन्होंने इवैल्यूएशन करनी है, उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी है और उसके बाद उन्होंने अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। ये आपके तमाम पार्ट्स हैं जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर एक बंदा प्लानिंग में ठीक नहीं है, यानी जब तक आपको खुद का ही नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू वैल्यूएट if I'm lacking in planning, if I'm lacking in organizing, if I'm lacking in staffing। स्टाफिंग आपका एक बहुत बड़ा, आप एक गलत बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप डेलीगेट नहीं कर पाते।
जो काम आपका सबॉर्डिनेट या जूनियर कर सकता है, डेलीगेशन इज आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू डेलीगेट प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल ये एक मैनेजर है, उसने एक पेज टाइप करना है और उसका एक जूनियर है या उसका स्टाफ के अंदर एक बंदा है वो टाइप कर सकता है, तो योर टाइम इज नॉट वर्थ कि आप उस पेज को टाइप करें और अपना टाइम जो है उस पर वेस्ट करें। अगर वही टाइम आप अपनी प्लानिंग में लगाएं, वही टाइम अपनी ऑर्गेनाइजिंग में लगाएं, अपने स्टाफ को इम्प्रूव करने में लगाएं, तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों में जो सुपरवाइजरी स्किल्स हैं वो लैग करते हैं। Unless you don't know कि what are your key performance indicators क्या है, what success means to you and what success means to the team and what success mean for the organization, unless you don't have a clear picture, यानी आप एक तरह की परफॉर्मेंस करके समझ रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, या आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिफरेंट है, तो अनलेस यू डोंट नो द व्हाट आर माय की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यू कैन नॉट परफॉर्म बेटर। सो दिस इज योर सीनियर कैन डिसाइड कि व्हाट वैल्यूज यू कैरी विच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि once your team is performing, you are not measuring the performance, आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं यू आर नॉट मेयरिंग देम प्रॉपरली। व्हेन यू आर नॉट मेयरिंग देम प्रॉपरली तो आपको वैल्यूएशन ही नहीं होगा कि परफॉर्मेंस ठीक जा रही है या ठीक नहीं जा रही। और अगला एक बहुत जो ज़रूरी पार्ट है दैट इज़ योर रिपोर्टिंग। आप ये देखें कि अक्सर आपको फॉर्मेट्स भेजे जा रहे होते हैं कंपनी की तरफ से, बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल देम प्रॉपरली। Different statements are coming on different formats. So all these 6 functions which I briefly represented you being a manager, you have to plan. Okay, what is my plan? What is my key performance indicator? How I organize my plan, and what kind of a proper staffing I need. If current staffing is fulfilling my requirements or not, and then what kind of delegation I need to do. कौन सा काम है कि जो मुझे करना है, क्योंकि लीडर जो है उसका काम एक कोच का है। जैसे इट्स वेरी सिमिलर टू पेरेंटिंग। आप देखते हैं कि जब बच्चे के इब्तदाई सालों में आप उसको चलना सिखाते हैं, जब उससे बड़ी एज होती है तो फिर आप उसको पढ़ना सिखाते हैं, उससे बड़ी एज होती है तो और चीज़ें आप सिखाते हैं। Similarly, your team at different level of competencies, तो your performance और your need as a coach is very important। कि आपको ये देखना है कि ये मेरा जो पर्सन मेरी टीम में जो रिपोर्ट कर रहा है मुझे, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। Some people they are not good at a product knowledge, you need to give them a better product knowledge. Some people they are not good at prospecting, तो आपको उनको बताना है कि what is a good way of prospecting। इसी तरह से डेलीगेशन के बाद आपने जो मेजर करना है परफॉर्मेंस को, देखें आपकी जो वीकली मीटिंग्स है, आपकी डेली मीटिंग्स हैं, या जब भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर नॉट मेजरिंग योर परफॉर्मेंस यू आर नॉट रिगार्डेड एज ए गुड मैनेजर। एंड फाइनली यू हैव डन एवरीथिंग राइट but you are not able to report properly the formats required, the things, the different kind of graphs required, different kind of representations required, you are lacking in that। तो एक सर्वे में पता चला कि जब मैनेजर्स खुद को एवेल्युएट करते हैं तो 75% लोग जो हैं खुद को 25% में समझते हैं, टॉप 25 में समझते हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती। और अगर आप किसी को सेल्फ एवेल्युएशन के लिए कहें तो वो अब खुद को डिफरेंट स्किल्स में टॉप 20 में रेट करते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू आस्क योर सीनियर और आस्क योर जूनियर्स हाउ दे रेट योर डिफरेंट स्किल्स, देन यू विल हैव अ ट्रू पिक्चर। जब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि मैं लैग किस में करता हूँ, तब तक तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ तो नहीं जा सकते। Unless you have a clear picture that which different 6 management functions you are lacking in, and then you work on it every day। देखिए, मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, सेलिंग स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि लर्नेबल स्किल्स। नन ऑफ इट इज़ अ स्किल जो कि बाय बर्थ ही आप लेके आते। और आप अगर देखें कोई भी शख्स जो आपके प्रोफेशन में
आप समझते हैं कि टॉप 1, टॉप 5 या टॉप 10 पे है, एक दिन वो बॉटम 10 में था। जब उसने स्टार्ट किया तो वो आपकी तरह ही उन्होंने अपना स्टार्ट लिया। बट वेरी अर्ली इन देयर करियर दे डिसाइडेड दैट वेयर दे वांट टू गो एंड व्हाट इट टेक्स टू गो देयर। और उस स्किल के ऊपर उन्होंने हर रोज मेहनत की, उस स्किल को इम्प्रूव किया। और आपको खुद को वैल्यूएशन करने का एक बहुत अच्छा सर्वे आपकी टीम भी दे सकती है। इफ यू गॉट टू हैव अ ब्लाइंड सर्विस विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, यू गॉट टू नो कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज ए मैनेजर क्या है। योर इमीडिएट बॉस कैन टेल यू वेरी वेल। इसी तरह से जब आप निचले लेवल पे आते हैं, क्योंकि आपका एक फंक्शन जो सेलिंग भी है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब अदर देन द मैनेजमेंट, उसमें भी आप वैल्यूएशन करें कि जो आपकी अपनी कंपनी में, आपकी पीयर कंपनीज में, या पाकिस्तान की तमाम कंपनीज में, या दुनिया की तमाम कंपनीज में कौन लोग हैं जो बहुत कम अरसे में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5, टॉप 1 में आ जाते हैं। तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ग्रोथ इज फास्टेस्ट, इफ यू आर कमिटेड, योर rising to maximum income is fastest compared to any profession in the world। यानी आप बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी जॉब शुरू करता है लाइक 40-50,000 की सैलरी से, अगर वो कमिट करता है तो विद इन 10 years he can go up to an income level of $1 million or plus। दिस इज ओनली पॉसिबल इन द सेल्स प्रोफेशन, जहाँ पे आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करती है, किसी हद तक काउंट करती है। आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट करती है दैट इज़ योर कमिटमेंट, हाउ कमिटेड यू आर टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन। यानी बहुत ही सादा मिसालें हैं, हमने आपने बहुत दफ़ा देखा कि एक बंदे ने करियर शुरू किया as a representative and after 20 years you see he's carrying the same bag, he's doing the same charity, he's doing the same job because he has not committed himself to go at a higher level. And his colleague in the same company, he joined and picked up the same bag and same charity, he's the MD of the same company. How this is possible? This is only possible when you are very clear with your key performance indicators, what it takes to be good in sales, good in management, good in leadership. आपका पहला जॉब एज ए सेल्स पर्सन क्या है कि यू हैव द राइट स्किल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कि आपने अगर खुद को नहीं मालूम योर राइट प्रोस्पेक्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट हाउ गुड यू आर एट अप्रोचिंग। पता चला कि एक कॉल आपने की है 8 बजे और दूसरी कॉल का टाइम है 10 बजे, यू आर वेस्टिंग 2 hours। हाउ यू क्लस्टर योर कॉल्स इज अनदर स्किल यू नीड टू प्रेजेंट, एंड हाउ यू एंड योर टीम इज एबल टू improve your presentation skills। Presentation skills, unfortunately, in the recent time has declined a lot. The people, they think that if we go and just give a reminder, which is a cold calling, so the product will sell. It will not sell. Actually, it is a kind of a presentation interview। इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक आप अपने और अपनी टीम के क्वेश्चन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आपकी कॉल की एफिकेसी नहीं बढ़ सकती। अब वो दौर नहीं है कि आप जाएं और सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करें और प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ, नथिंग सेल्स इटसेल्फ। Improve your prospecting skills, your and your team. Improve your approaching skills, which has a right kind of mapping of utilization of your time and territory. The third part comes when the sales skills is your presentation skills. Presentation skills, you convert it to a presentation interview. And when you ask a question and explain your product, then ask a question and explain your product, end of the call, you got to know that if my idea is rightly understood or not। दोनों तरह से आपको पता चल जाएगा कि आइडिया अंडरस्टैंड हुआ है, सेल हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड फ्यूचर इज फॉर द आस्कर्स। ये बहुत दफा हम बात कर चुके हैं। इफ यू डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। इफ यू आस्क a question, there is a probability of 50% the answer is yes or no। So always build your sales call and your team sales call based on good questions, and good questions come from a lot of training. You got a lot of training, good comes from the product knowledge, and then you see that your and your team skills to handle the objections। There are basically 4 or 5 kind of objection. There is a price objection, availability objection, competitor analysis, or whatever.
Objections are the questions you need to be answered. If somebody is objecting your product, it means he is interested. बहुत दफा आप देखते हैं आपने पूरी बात कर ली तो ये ना यस है ना नो है, कोई आगे से सवाल ही नहीं आया, it means he is not interested. So when you are asking questions and he is asking question, it means there is a bonding and there is selling is gonna happen. And last is, which is not the least, which is the ultimate, the end of the call, you summarize whatever you have the discussions or questions and you ask for action. Ask for action is your closing skills. Different kind of closing skills, you can ask the different variants of your product, red or blue. You can ask 30 milligram or 40 milligram, 200,000 or 5,000, 10,000, whatever you're going to prescribe. And you ask about the availability, you ask about the pattern of prescription, you ask so many questions you can ask. In a closing के ऊपर तो पूरा अलग से आपको एक presentation या एक training का ज़रूरत है. And once you are done with the closing skills and you have a customer build who is prescribing your product, then comes the referrals, that you build the network. How you build the network? You can have a referral letter from your customer. Nowadays the videos are very popular, so you can have a short video from your customer and then you can put it on social media so that the opinion leaders are prescribing your products and many people get inspired with that. You can refer that to your WhatsApp or your whatever the social media status is, so that the people got to know that somebody who has an impact in this profession is prescribing your product. And once your product is selling, then you can increase the frequency, you can increase the indication, you can increase the referrals from that person to his peers, his colleagues or his network. So आज की बात का मेन मकसद सिर्फ ये है कि either you are direct in selling or you and your team, you are direct in management, you need to identify where you are good at and where you are not so good at. Unless you don't know, you cannot improve. तो आपका बॉस आपको बता सकता है, आपका जूनियर आपको बता सकता है, आपका कलीग आपको बता सकता है कि आपका कौन सा फंक्शन जो है वीक है. When the product managers go, when SFE go, when your top management goes, they are telling you after every call analysis you don't have a pre-call analysis good, you didn't have the pre-call analysis information about the prospect, you had the wrong prospect, आपका product इस indication का आप wrong specialty में जा रहे हैं. So identification is very important. Once you identify where you are weak and then you take a kind of a commitment कि यार ये मेरा वीक एरिया है, यहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में, एक साल में. तो उसका तरीका बहुत सिंपल है. यू जस्ट स्टार्ट reading about that skill 15 minutes a day. You can listen to any audio video for 15 minutes a day. And then both things, your performance and your review performance, what is your preparation. हमारे जो मैं समझता हूँ कि सेल्स का प्रोफेशन है, यहाँ पर आप मीटिंग करें, यू आर विजिटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, you are sitting with your team having a debriefing meeting, whatever you are doing other than a sales call where customer is interacting with you is your preparation. And what is your performance? Your performance is only when you are interacting with the customer where buying and selling is gonna take place. जहाँ पे exchange of ideas against the prescription, against your sales हो रहा है, that is only regarded as the performance. And then you have to work on your team building skills. टीम बिल्डिंग स्किल जो है वो, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि योर रोल एज ए मेंटोर, your role as a coach, your role as a father figure, and your role always having on your face and on your words one sentence: how I can help you improve, how I can help you improve. When you keep on asking your team this thing, you will see a very very huge change in your management style. देखें, मैनेजमेंट के अंदर लोग आपको मैनेजर या लीडर क्यों मानते हैं, उसके एक सबसे पहला आंसर है बिकॉज दे हैव टू. देखिए, आपकी एक टीम है तो उनको तो आपको एक लीडर मानना है, बिकॉज दे हैव नो चॉइस. एक बंदा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका एक सुपरवाइजर है, तो उसका सुपरवाइजर है तो उसको मानना है.
और उसका जो नेक्स्ट लेवल ये है, बिकॉज यू हेल्प देम ग्रो। जब आपकी टीम ये समझती है कि ये बंदा जो हमें बात बता रहा है, जो हमें काम बता रहा है, जो चीज़ें हमें बता रहा है, इससे हम एज ए प्रोफेशन ग्रो कर रहे हैं, हमारा इनकम का लेवल ग्रो कर रहा है, हमारा स्किल का लेवल ग्रो कर रहा है, देन देयर एक्सेप्टेंस एज ए लीडर इज नॉट सुपरफिशियल। You got to understand this. One is because they have no choice, because you are their manager, you are their leader, they have to. But when you teach them, they respect you more. When you help them, they respect you more. And when they realize, which is an ultimate level of a leadership, that you help them grow, they have a belief, strong belief कि ये वो बंदा है जो ये चाहता है कि हम प्रोफेशनली ग्रो करें, ये वो बंदा है जो ये चाहता है कि हम आगे बढ़े लाइफ में, हमारा इनकम का लेवल बढ़े, तो देन दे रिस्पेक्ट यू फ्रॉम देयर हार्ट। कहते हैं ना, लीडर इज अ पर्सन हु नोज द वे एंड हु शोज द वे एंड हु वॉक्स द वे। लाइक ये नहीं सिर्फ आपको बताता रहता है, बट लीडरशिप इज बाय एग्जाम्पल ऑल्सो। ही वर्क्स हार्डर देन यू डू, he has knowledge more than you do, he has a skill more than you do, and he keeps on working in his own skill. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आई एम द CEO of the company and why I need to learn and I need to teach all this to all you people, because I think that my knowledge is not ultimate, my skill is even not ultimate, so I need to study every day, I need to listen every day, I need to talk every day. So when you have this kind of vision at every level in the organization, nobody thinks that you are perfect. Yes, you are comparatively better than many maybe, but still your skill needs to be improved every day. तो आज की बात के अंदर दो ही बातें हैं। भले आपका सेलिंग स्किल है जिसके अंदर मैंने 6 बातें आपको बताई, आप प्रॉस्पेक्टिंग करें, आप अप्रोचिंग करें, आप प्रेजेंटेशन करें, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, आप क्लोजिंग करें, आप रेफरल्स ले रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप सेल्स मैनेजमेंट करें, सेल्स का एनालिसिस करें, वॉट एवर यू आर डूइंग, you need to identify where my team and I need to improve. The second part is your management skills. Management skills, I told you, first thing is the planning. If you don't have a plan, जैसे आप वर्क प्लान मांगते रहते हैं, if you don't have a plan, it means that you are going nowhere. That is also a plan. Having a no plan is also a plan. When you have a plan, you need to organize yourself. When you organize yourself, you need a staff, and you need a staff who can perform better than you. And then you need to delegate a lot of things कि भाई आप एक बंदे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक एरिया के अंदर 500 कॉल्स करें, you alone cannot do. So what you need to do is to delegate. मेरे फरहान साहब चाहते हैं हम पूरे पाकिस्तान में 2 लाख कॉल्स करें, तो he cannot do alone, he need a team, and he don't have a good staff, good team, he cannot perform. And then if he delegates properly, then he has a lot of time for himself for planning and organizing and what his key performance indicators to work on that. And once your team has delegated, how you are measuring the performance, yourself and your team. Periodically आप उसको measure कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. Once you measure that, you are not reporting. So identify the scale where you are lacking, and then improve your skill. You're lacking in the product knowledge, you're lacking in the scale, you're lacking in the management style. And then most importantly, be a leader who inspire people to do more, to do their best. And how you can inspire? You can inspire only when you make your team believe that you are working for them. You are working for their improvement as a person, as a skill, as income level, and your progress in your future and your profession. I believe if we focus on these things and we are able to identify that how we can get better. And one more thing, networking is very important. मैंने एक पेपर भी लिखा था चंद दिन पहले, I distributed to everyone. Network with the people with whom you would like to be. आप जैसा बनना चाहते हैं,
ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करें। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ कि योर पर्सनैलिटी इज एवरेज ऑफ द 6 पीपल यू इंटरेक्ट विद। आप एनालाइज करके देख, अगर आपके 6 दोस्त नमाजी हैं तो आप भी नमाज पढ़ते होंगे, आपके 6 दोस्त ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं तो आप भी सिगरेट पीते होंगे, आपके 6 दोस्त हैं जिनकी कोई और आदत है तो आप देखेंगे किसी ना किसी हद तक वो आदत आपके अंदर होगी। तो इफ यू वांट टू बी हाईली सक्सेसफुल तो यू नीड टू इंटरेक्ट विद दी highly successful people. So networking is very important. At least 10 to 20 people in your network which you regard as the best or you would like to be like that should be in your network. Every day you interact with them and occasionally you meet them. One meeting with a successful person is worth reading 6 months in any university. This is my quote personal. So all these things, one straight message at the end I would like to close is identify your strength, identify your area of improvement, and identify where you actually want to go in your life, in your profession. Once you identify, then take those 2 or 3 things. आप ये आइडेंटिफाई करेंगे ये 3 चीजें अगर मैं कर लूं तो फिर तो मैं टॉप पे जा ही सकता हूँ। वो 3 चीजें जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, 20 मिनट डेली उसके ऊपर पढ़ना है आपने, 20 मिनट डेली उस पर सुनना है आपने, और 20 मिनट डेली उसको प्रैक्टिस करना है। I bet you after a year, after a month, after 6 months, you're not going to be the same person, I tell you. So my purpose of being here, because I care about your success, because I believe if you are successful, then I'm successful. When we all are successful, this company is successful. So I believe that whatever we have, discussed today, we take it with our heart and in our mind and we work on that, because यहाँ पर बात तो आपकी इम्प्रूवमेंट की हो रही है, आपके आगे बढ़ने की हो रही है, आपकी इनकम के बढ़ने की हो रही है। तो उसके यही कुछ तरीके हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो फिर हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा, फिर सिर्फ हमें आगे ही देखना पड़ेगा। अपनी कंपनी में आप देख लें, if you compare yourself with the highest performing person, highest performing manager, highest earning person, why he is there and you are here, you will get the answer. When you get the answer, start working on that today from today, and I wish you very good luck for that. Thank you.